Assalamu alaikum students, welcome back to physics class. Today we will go through the short questions from unit 3 dynamics part 1 of class 9th physics. I will explain each answer step by step so you can understand the concept of force, mass, weight and Newton's laws in a simple way. Let's begin and clear the concepts of these short questions. Question number 1 is, when a motorcyclist hit a stationary car, he may fly off the motorcycle and driver in the car may get neck injury. Explain. If a car is stationary and a motorcyclist hit it from back, motorcyclist will fly off, वो आगे जाके गिरेगा and the person sitting in the car will get a neck injury. Why is it happen? When the motorcyclist hits a stationary car, his body continues moving forward due to inertia, so he may fly off. The car's driver head snaps forward then backward, causing neck injury due to sudden acceleration and deceleration. Actually, what's happened here, जब मोटरसाइकिल मूव फास्ट करता है, जब वो एक कार में जाके क्रैश करता है, जो मूव नहीं करती कर रही होती, वो स्टेशनरी होती है, मोटरसाइकिलिस्ट बॉडी वांट्स टू कीप गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, उसको सडन वो जाके उसको लगी है, तो वो उसकी बॉडी सेम उसी स्पीड से आगे कीप गोइंग फॉरवर्ड, वांट टू कीप गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ inertia की वजह से. That's why inertia is the resistance. Basically inertia is the resistance in stationary rest or motion position. ठीक है, so उसकी बॉडी बेसिकली inertia की वजह से resist करती है, वो उस बाइक के साथ, मोटरसाइकिल के साथ वहां पे स्टॉप नहीं होती, वो आगे फ्लाई आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करती है. That's why he can fly off with same speed. Okay, the car's driver had snapped backward, then forward, then backward, causing neck injury due to sudden acceleration and deceleration. Driver के साथ क्या होता है? The car also suddenly moves a little when hit. जो कार होती है वो बेशक स्टेशनरी होती है, रेस्ट कंडीशन में होती है, लेकिन जब उसको साथ एक फोर्स से बाइक मोटरसाइकिल आके लगती है तो वो भी it also moves a little with sudden hit. So the driver's body moves forward, but the seat belt and the seat stops it quickly. उस ड्राइवर की बॉडी को भी फोर्स लगती है और वो भी आगे होने चाहती है, बट जो सीट बेल्ट होती है या सीट जिस सीट में वो बैठा होता है वो उसको क्विकली स्टॉप कर देती है. द हेड कीप्स मूविंग. हेड क्योंकि फ्री, हेड रीजन फ्री होता है, तो हेड पहले मूव्स फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, तो वो एक स्नैपिंग होती रहती है, आगे पीछे होता रहता है. इस कंडीशन सडन एक्सेलरेशन के आगे की तरफ, देन वापस रिवर्स कंडीशन की वजह से उसके जो नेक मसल्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, सो इट causes neck injury. Question number 2 is, in autumn when you shake a branch the leaves are detached. Why? Autumn में जब हम ब्रांच के जो लीव्स उनको ब्रांच को शेक करते हैं तो उसके लीव्स गिरते हैं. क्यों? When you shake a tree branch suddenly the branch moves but the leaves tend to remain in their original position because of inertia, the natural tendency of an object to resist a change in its state of rest or motion. Since the connection between the leaves and the branch is weak, this sudden difference in motion causes the stalks to break and the leaves get detached and fall to the ground. Basically what happens here कि जब हम शेक करते हैं, हिलाते हैं ब्रांच को तेजी से, ब्रांच तो वो जो ब्रांच होती है, टहनी होती है, वो मूव करती है, बट जो लीव्स होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया, अपनी उस सेम रेस्ट कंडीशन में रहना चाहते हैं. तो एक जो उसके जो स्टॉक होती है लीव्स के और ब्रांच के बीच में, वो बहुत मतलब वो वीक होती है, वो इजीली ब्रेक हो जाती है. वो एक सडन जर्क होके ब्रांच मूव कर रही है बट लीव मूव नहीं कर रही, इस सडन जर्क की वजह से वो टूट जाती है. Question number 3 is, why is it not safe to apply brakes only on the front wheel of a bicycle?
बाईसाइकिल के अगर सिर्फ अकेला फ्रंट व्हील को अगर ब्रेक लगाए जाए तो ये सेफ क्यों नहीं है? इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द फ्रंट व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल, द फ्रंट wheel will stop suddenly while the rest of the bicycle and the rider's body keep moving forward due to inertia. This can cause a bicycle to tip forward and the rider to be thrown over the handlebars, making it unsafe. Basically what happens here, if you suddenly stops the front wheel, जब हम फ्रंट व्हील को सडनली स्टॉप करते हैं, जो रेस्ट ऑफ द बाइक और जो बॉडी होती है वो इनर्शिया की वजह से रेजिस्ट कर जाती हैं, वो सडनली स्टॉप नहीं होती, वो अपनी इनिशियल मोशन को कंटिन्यू करते हैं, इस वजह से वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। और दैट्स वाई बोथ ब्रेक्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई एट द सेम टाइम। ठीक है। Question number 4. Deduce Newton's first law of motion from Newton's second law of motion. कैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन. If no external force act on the body means force is zero, then the acceleration is also zero. This means they are directly proportional to each other. This means the body's speed and the direction remains unchanged. This is exactly what Newton's first law says, that an object stays at rest or keeps moving in a straight line at a constant speed unless acted upon by a force. ये उसमें भी यही था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो बॉडी जो है वो उसी सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में, मतलब कांस्टेंट स्पीड में, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करती, स्पीड में मूव करती है, और इस एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। तो न्यूटन से फर्स्ट लॉ का भी यही कहना है कि बॉडी अगर रेस्ट पर है या अगर बॉडी एक मूव कर रही है, तो जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो वो अपनी उस पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। Question number 5. Action and reaction are equal but opposite in direction. These forces always act in a pair. Do they balance each other? Can bodies move under action reaction pair? Basically, action and reaction forces are always equal in magnitude but opposite in direction. They act on different objects, so they do not balance or cancel each other, because each object experiences only one of those forces. Both objects can move in response to the forces acting on them. Example, when you jump off a boat, you push the boat forward. अब हम पहले बोट को बैकवर्ड पुश करते हैं, and in return boat push us forward reaction के तौर पे, causing both you and the boat to move. Basically इसमें क्या हो रहा होता है कि एक्शन रिएक्शन हो रहा होता है कि वो इक्वल इन साइज होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, और एक्शन डिफरेंट बॉडी पे अप्लाई होता है और रिएक्शन दूसरी डिफरेंट बॉडी पे अप्लाई होता है, क्योंकि दोनों सेम बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहे थे, तो एक दूसरे को ये कैंसिल या बैलेंस आउट नहीं कर सकते। ठीक है। बोथ बॉडीज मूव, यस बोथ बॉडीज मूव, जैसे इस एग्जांपल में है कि एक्शन बोर्ड पर लगाया जा रहा है, रिएक्शन उस ह्यूमन बॉडी पे लगाया जा रहा है, और दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर मिलके उस दोनों को मूव करवाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. अ मैन स्लिप्स ऑन द ऑयली फ्लोर. He wants to move out of this area. He is alone. He throws his bag to move out of this slippery area. Why is it so? When a man throws his bag, he exerts a force on it. वो एक फोर्स से बैग को आगे फेंकता है. By Newton's third law, the bag exerts an equal and opposite force on a man, pushing him in the opposite direction. This helps him move out of the slippery area even without the friction. Basically, according to Newton's third law of motion, every action has equal but opposite reaction. On a slippery floor, you can't walk because your feet can't push the floor. हम slippery floor पे मूव नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती. हम फ्लोर को, स्लिपरी फ्लोर को पुश नहीं कर सकते कि वहाँ पे वॉक कर सकें डायरेक्शन के तौर पे.
बट इफ अमान थ्रोस इट बैग फॉरवर्ड, अगर अमान एक फोर्स से बैग आगे थ्रो करता है, बैग की जो फोर्स है वो रिएक्शन में उसको उसी उतनी फोर्स से बैकवर्ड पुश करती है उसी ऑयली सरफेस के ऊपर। वो बैकवर्ड पुश क्या करता है, अमान को हेल्प करता है उस स्लिपरी एरिया से मूव आउट होने में। क्वेश्चन नंबर 7, how would you use Newton's third law of motion and law of conservation of momentum to explain motion of rocket? जो motion of rocket है उसमें हम देखेंगे कि ये दो laws कैसे apply हो रहे हैं, एक Newton's third law और दूसरा law of conservation of momentum. A rocket moves forward by expelling hot gas backward at high speed. According to Newton's third law, the backward push of gases produce an equal and opposite forward push on the rocket. In space, when there is no air resistance, the total momentum of the rocket and gases remain constant, so the rocket keeps speeding up as long as it expels gases. This is law of conservation of momentum. Basically, what is happening here कि जो रॉकेट है वो पीछे से हॉट गैसेस को बैकवर्ड पुश करता है, थ्रोज हॉट गैसेस बैकवर्ड एट हाई स्पीड। ये क्या है, एक्शन है। इन रिटर्न गैसेस पुश रॉकेट फॉरवर्ड एज रिएक्शन। सो दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नो एयर इज नीडेड फॉर दिस, सो इट वर्क इन स्पेस टू। तो टोटल मोमेंटम रिमेन सेम कि रॉकेट और गैसेस का कोई, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। जितनी फोर्स से गैसेस पीछे की से निकलती हैं उतनी फोर्स से वो गैसेस वापस उसको आगे की तरफ पुश करती हैं। तो दिस इज हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज हैपनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, वाई आर क्रिकेट बैटर ग्लव्स पैडेड विद फोम? क्रिकेट के जो बैटर होते हैं उसके ग्लव्स के अंदर फोम क्यों भरी होती है? Cricket gloves are padded with foam to protect the hands from injury. The foam increases the time of impact, which decreases the rate of change of momentum, reducing the impact force on the hands and makes the hit less painful. Basically, force is equal to change in momentum divided by time. Longer the time, स्मॉलर द फोर्स, लेस द पेन। मतलब वो बॉल बहुत फोर्स से आके उसके पैड पे अगर टकराए तो अगर वो फौरन मतलब विदाउट वेस्टिंग द टाइम, जैसे जिस मोमेंट पर बॉल हमारे हैंड के साथ हिट हुई है तो वो फोर्स हाईएस्ट होगी। टाइम विल बी शॉर्टर, फोर्स मोमेंटम विल बी हायर, तो वो बहुत हाइट करेगी हैंड को। लेकिन वो जो फोम होता है वो क्या करता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज करता है, ज्यादा टाइम लगता है बॉल को हमारे इंटरनल हैंड के साथ को टच करने में। इसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज होता है, जिसकी वजह से अब टाइम बढ़ गया है। टाइम हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद फोर्स, तो वो क्या होता है, फोर्स कम फोर्स से बॉल हमारे हैंड को टकराती है और वो लेस पेनफुल होता है। अगेन कीप इन माइंड formula, force is equal to change in momentum divided by time, means time and force are inversely proportional. Question number 9, where will your weight be greater, near earth or near moon? What about mass? हमारा जो वेट है कहाँ पे ज्यादा होगा, near earth और near moon? और मास के साथ क्या होगा? Your weight, you weigh more on earth because earth's gravity pulls on you more strongly than the moon's weaker gravity. Your mass, however, stays same, exactly the same everywhere because it is the amount of matter in your body and does not depend on gravity. Mass is the amount of matter in your body which never change because of this surrounding atmospheric forces. वेट क्या है, ये है पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन योर बॉडी, जो लोकेशन के साथ चेंज होती रहती है। ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की स्ट्रॉन्गनेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ऑन अर्थ ग्रेविटी is stronger, so weight is more. On moon gravity is weaker, so weight is less. Question number 10,
When Ronaldo kicks the ball at the highest point of ball, both earth and ball attract each other with the same magnitude of force. Why then the ball moves towards the earth and not the earth? Because at the highest point, the earth pulls the ball and the ball pulls the earth with equal force. As stated by Newton's third law, however, Earth's mass is enormously greater than the ball's. The acceleration of Earth is so tiny that it cannot be noticed. The ball mass is much smaller, so the same force produces as much larger acceleration, causing the ball to fall toward the Earth. Basically, what's happening here? Newton law plus different masses are working here. Ball pulls Earth and Earth pulls ball equally. As Earth's mass is huge, force causes almost no movement. Ball mass is tiny comparative to Earth, that's why same force causes big movement. That's why ball falls toward the Earth, not the other way. So that's all for today. You have now revised all key short questions from Unit 3 Dynamics, Part 1. Keep practicing and revising these concepts to build a strong foundation for your exam. If you enjoyed learning today, don't forget to like, share and subscribe for more easy physics explanations. See you in next class. Till then, Allah Hafiz.